हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है दूसरा दिन हमारे गोवा ट्रिप का। ये है उमेश, देखो मुझे देख के भाग गया भाई, क्या डरता है। तो हम सब ने अभी नहा लिया। देखो अभी रूम की हालत एक ही रात में कैसी कर दी ये लोग ने, पता नहीं। अभी सब नहा के आ गए, अभी बज रहे हैं 10:10। तो अभी हम जाने वाले, एक स्कूटी रेंट करने वाले हैं। फिर स्कूटी रेंट पे फिर हम घूमने वाले, सब बीच पे नहाने वाले हैं। तो मैं सब आपको दिखाऊंगा डिटेल में, अभी बता दूंगा सब क्या करूँगा। तो चलो। What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They weigh me down. तो अभी ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं। एक्चुअली ये बागा बीच नहीं है, थैंक यू। ये दूसरा ही कोई बीच है। और बोल पाए अब मेन पॉइंट नहीं देख सकते हो, उधर दिख रहा होगा, दमन जो केस चला, उधर जाके दिखा दो। My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to. ये है बीच, कैलंगट बीच। और हम लोग ये बीच पे नहाने नहीं जाने वाले, क्योंकि ये बीच का जो पानी है ना, वो इंसान को खींचता है वो समुंदर की तरफ। तो वो अंकल ने बोला कि इसमें आप नहीं जा सकते। तो अभी हम जाएंगे इसके अगले वाले बीच पे, जो है कि बागा बीच। तो उसमें हम नहाने वाले हैं। तो अभी आप सिर्फ व्यू देखो। Honey, I'm a perfect 10. 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 Whoa. Honey, I'm a perfect 10. 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 Oh, yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face. I stood and wait because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the. हम लोग वो बीच से आ गए हैं, कलीगढ़ बीच से। तो वहाँ पे नहाने का सोचा तो था नहीं, पर नहा लिया सब ने। तो फिर आ गए, सब लोग थके हुए थे। तो मैं और पार्थ तो इधर सो गए थे साथ में। क्या पार्थ, बस अभी थक गए। अभी सब लोग उठ गए हैं, अभी बज गए हैं 5:20। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं बाहर घूमने, और पहले बागा बीच जाने वाले हैं, सब घूमने वो सब करने। फिर उधर से दूसरे बीच, आज सब बीच खत्म कर देने वाले हैं हम। फिर कल चर्च वो सब घूमेंगे। और फिर आज रात को हम बाजार में जाएंगे शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। Upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think. Honey, I'm a perfect 10. तो अभी हम बागा बीच पे है, ये वत्सल भाई के साथ। और ये पार्थ सनसेट देख रहे हैं भाई पार्थ। हाँ भाई, सवाल इतने जो आए। तो अभी इधर बागा बीच में सनसेट देखने आए, इस बार नहाने नहीं वाले। अब देख सकते हो इधर का व्यू कितना खतरनाक है। ओके कवर, कितना खतरनाक व्यू है भाई। जरा पब्लिक तो देखो यार।
हमारे लोग का वीडियो Honey, I'm a perfect 10. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. 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 Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. अभी पंजिम पे आ गए हैं। Discussed it with myself and I'm disgusted with the way we're told to have a certain गाइस, तो अभी हम जाने वाले हैं बोट में। ला मस्त घूमने के लिए पूरा ऐसा बोट में हमने टिकट ले लिया है। 12 किलोमीटर हमें बोट घुमाएगी पूरा कसिनो के बाहर से कसिनो में जाने देंगे। because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell बोट में बैठ गए हैं हम सब। देखो एकदम कॉर्नर वाले out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down